So here we are talking about the osmotic relations of the plant cell. So osmotic relation, the first जो अपन गल करेंगे कि like how these terms dpt or the water potential are related to each other, that depend upon the two type of things or the two type of ways of the plant osmotic relationships. One is the rising turgidity. जिदा ही आप गल करें कि placid अगर cell अपने को ठीक है placid one है तो फ्लैसिड वन ਦੇ ਵਿੱਚ अगर वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा वाटर इंटरनली इनटेक हो गया ठीक है इट लीड्स थ्रू द टर्जिडिटी. सो टर्जिडिटी मीनस फुली ग्रोन हो गया. सो जिस करके की सी जे अगर आप गल करते हैं कि वो पहला जो ऑस्मोटिक प्रैशर है इन दिस पर्टिकुलर फ्लैसिड वन ऑस्मोटिक प्रैशर की सी ज़्यादा सीगा ठीक लाइक इट इज़ अप टू 100%. 100 अगर वो वैल्यू है ठीक है एंड देयर इज़ अ डिक्रीज इन द we can use the term decrease in the turgor pressure that having a value of 0 ठीक है ना. फर्स्ट जी आप गल करते हैं जो फ्लैसिड कंडीशन थी बट जिदा वो वाटर की एंट्री हुई सो दीज थिंग्स टर्गर प्रेशर गोज़ टू बी इंक्रीज दैट मीनस इट रीचेस टू द वैल्यू ऑफ अप टू नियर अबाउट 50. बट हेयर इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर से वो वैल्यू की होगी डिक्रीज होगी इट ऑल्सो रीचेस टू द 50. ठीक है दैट मीन्स दे गॉट टू बी रीचेस एट अ इक्वल वैल्यू 50/50. so they get to be neglected on because here osmotic pressure minus turgor pressure, so they have also 50. We can write down like we can write down 50 minus 50. Obviously it becomes equal to the 0 because they cancel out each other. So this dpt becomes equal to the 0. And in case of water potential is equal to the psi s plus psi p. So they are also equal to the 0 because psi s is in negative state. The solute potential है जो negative value ਦੇ ਵਿੱਚ available है. So like here we can write down minus 50 plus 50. So it becomes 50 equals to 50. Obviously they get cancelled out and they also becomes a 0 value. So psi s becomes equal to the psi p and this psi w becomes equal to the 0 also. Whereas in case of loss of turgidity ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ opposite ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ. loss of turgidity ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक हाइपरटॉनिक सोल्यूशन हाइपरटॉनिक सोल्यूशन इन द सेंस कि जिस की होएगा वाटर जोड़ा सॉल्वेंट पार्टिकल ने सॉल्वेंट पार्टिकल्स वो की होंगे हाइपरटॉनिक सोल्यूशन घट होंगे बट जो सॉल्यूट पार्टिकल्स ने वो की ज़्यादा होंगे. सो जिस करके की अगर आप फुली टर्जिड सैल एक हाइपरटॉनिक सोल्यूशन रखते हैं इट गेट टू बी फ्लैसिड वन. श्रिंकेज उस हो जाएगी वाटर लॉस होएगा. सो मैक्सिमम फैक्टर जोड़ा वा किधर उत्ते पेगा दैट इज़ ऑन द टर्गर प्रेशर क्योंकि टर्गर प्रेशर जोड़ा फुली ग्रोन जो सेल सी या टर्जिड से उस ज़्यादा होएगा. सो इट ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू द 0. सो इन द fully flaccid or the plasmolar cell. So at this stage dpt becomes maximum and it equal to the osmotic pressure. So जो dpd है ਹੁਣ ਇੱਥੇ dpd ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਈਨਸ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਟ ਗਿਆ क्योंकि इट रीचेस टू फ्लैसिडिटी क्योंकि आप पहले गल कर चुके हैं जो फ्लैसिड सीगा तो उसका टर्गर प्रेशर की है 0 वैल्यू होएगी ठीक है ना विच रीचेस टू द 0. सो जिस करके जी dpt है दैट बिकम्स इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेम इन द केस ऑफ वाटर पोटेंशियल. सो वाटर पोटेंशियल दे विच भी थोड़े कोल की चीज़ आ जाएगी कि जो साई w है सो दिस साई w बिकम्स इक्वल टू द psi s दैट मीन्स सॉल्यूट पोटेंशियल बिकॉज हियर ऑल्सो psi p बिकम्स इक्वल टू द 0 ठीक है. सो दैट्स वाई psi w is equal to the psi s. So that's it regarding the conditions of osmotic relationship of the plant cell. So that's it. So next we will talk about later about the different things.